Hello, Jai Hind. Children, today I am going to tell you a story. Can you guess which story I am going to tell you? Yes, today I am going to tell you a story behind India's independence. Do you know when we celebrate our Independence Day? Yes, it's on 15th August. Children, before starting with the story, I would like to tell you the meaning of independence. Independence means Azadi. Children, repeat after me. Independence. Yes, independence. It's Independence Day. Starting with the story. Long time ago, India, can you see India? India was a very rich country ruled by various kings. India बहुत ही rich country था. All the people of different countries were attracted by the golds, silk, spices and other wealth of India. People of different countries like Portugal, Britain and France moved to India for trading with the permission of the kings. दूसरी countries like Portugal, France, Britain, इन सारी countries के जो लोग थे वो इंडिया ट्रेडिंग करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए, किंग्स की अनुमति से. People of different countries started liking India and this thought that why shouldn't we conquer India? उन्होंने सोचा कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं. And so they started fighting with the kings of India. और वो लोग इंडिया के किंग के साथ फाइट करने लगे. Slowly they conquered India. और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा पा लिया. सारे राजाओं को हरा के ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया पे कब्जा पा लिया. All the people of India lost their freedom. इंडिया के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी आजादी खो दी. Indians had to obey Britishers and they lost their freedom. Indians को ब्रिटिशर्स की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और उन्होंने अपनी आजादी खो दी थी. ब्रिटिशर्स लूटेड इंडिया. ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को लूट लिया. इंडियंस फाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर देयर फ्रीडम. इंडियंस क्या किए? ब्रिटिशर्स से फाइट करना स्टार्ट किए अपनी फ्रीडम को वापस लेने के लिए. दिस फाइट कंटिन्यूड फॉर मोर देन 100 years. ये जो फाइट था वो 1-2 साल नहीं चला, ये 100 साल से भी ज्यादा चला ये फाइट. Many people started revolt against Britishers like Tipu Sultan, Rani Lakshmibai, Tatya Tope, Mangal Pandey and many more. Later, the revolt was followed by many other leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Shekhar Azad, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose
and many more. Gandhiji, the father of our nation, started various movements and with the help of other freedom fighters forced Britishers to leave India. गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स चालू किए और बहुत सारे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प से ब्रिटिशर्स को फाइनली हरा दिया एंड फोर्स्ड ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया. India got its freedom on 15th August 1947. Since then, every year 15th August is celebrated as Independence Day. We celebrate Independence Day in the remembrance of the sufferings and struggles faced by our freedom fighters. So children, we got our independence after a lot of struggle and sacrifices. We should always remember that. Jai Hind, Jai Bharat.